Hello everyone, welcome to the Skill Space. My name is Kirti Jain and on this channel I talk about soft skill, career tips, resume building, interviews, etiquettes, productivity and a lot more. So if you are willing to learn all this, do subscribe to my channel and I will help you in your growth journey. So let's begin. Are you also struggling and juggling with a lot of work every day and you feel like कि आज तो बहुत सारा काम है, हुआ ही नहीं, productive नहीं था दिन, आज कुछ अच्छा नहीं किया है, right? Remember, everybody has this 24 hours and there are few people who manage these 24 hours very well. Why? Because they plan their day and along with planning they also track that what they have done in the entire day. On the other hand, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्लान ही नहीं करते एंड उनको डे एंड पे लगता है कि आज कुछ अच्छा नहीं किया, आज कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया या आज का दिन वेस्ट हो गया, या फिर वो प्लान तो करते हैं बट उसको एग्जीक्यूट नहीं करते एंड ट्रैक नहीं करते कि आपने पूरा दिन में क्या किया है, कहाँ अपना टाइम एंगेज किया है, कहाँ टाइम वेस्ट किया है एंड दे डू नॉट कीप अ ट्रैक ऑफ वेयर दे आर गोइंग, राइट? नाउ it happens very often. So how do you do and how do you track your time? In this video I'll give you 4 tips that will help you to make the most out of your day. No matter you're a student, young professional, working professional, experienced, everybody does a lot of tasks every day. But towards the end of the day, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा किया, आज का दिन प्रोडक्टिव था, वर्थ था, then that gives you more happiness, right? So I will tell you आप कैसे वो कर सकते हैं. So let's start with the number 1 tip is to have a to-do list. Now this is very common. आपने बहुत जगह सुना होगा, एक to-do list बनाइए और उसको फॉलो करिए. But most of the people, what mistake they do is they don't know how to make a to-do list or rather did not know how to follow a to-do list. टू डू लिस्ट बनाने से काम नहीं हो जाएगा, उसको फॉलो करने से, उसको एक्टिव रखने से, गिव सम लाइफ टू योर टू डू लिस्ट, राइट? देन ओनली इट विल गिव यू रिजल्ट्स. नाउ हाउ यू कैन मेक योर टू डू लिस्ट लाइवली. एज अ बिगनर, अगर आपने कभी भी टू डू लिस्ट नहीं बनाया या अगर आप नहीं टू डू लिस्ट पे काम करते तो प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग. एंड जब आप स्टार्ट करें वर्क करना, टू डू लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए. ऑल्दो टू डू लिस्ट कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेज, डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट टाइप्स, बट एज अ बिगनर आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए. नंबर 1 इज इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क. नंबर 2 इम्पॉर्टेंट एंड लेस अर्जेंट. बेसिस द अर्जेंसी आप अपने काम को कंप्लीट करिए. नाउ आप जो भी दिन में काम करते हैं इस लिस्ट में उसको लिखिए, उसको फॉलो करिए एंड स्ट्राइक ऑफ थिंग्स जो आपकी काम हो गए हैं, राइट? गो बैक, रिव्यू योर टू डू लिस्ट जो आपने लिस्ट बनाई है. डू नॉट जस्ट लिस्ट डाउन 100 थिंग्स ऑन दैट लिस्ट जो आप शायद नहीं करने वाले हो. राइट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको करना है and focus on one task at one time. Don't try to multitask या आप don't try to hop from one task to other. इसको complete नहीं किया दूसरे पे चले गए, दूसरे को complete नहीं किया तीसरे पे चले गए. This will never fetch you results, right? And if you have read that book, Eat That Frog, उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ कही गई है कि eat the biggest and the ugliest frog first. That means आपका जो भी biggest task है उसको आप सबसे पहले कंप्लीट करिए. दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट और आपका मेजर टास्क शायद ख़त्म हो जाता है एंड दैट ऑल्सो गिव्स यू अ लिटिल पीस, राइट? अगर आपका कोई बड़ा काम रह गया है तो यू फील स्ट्रेस्ड, टेंशन होता है आपको कि ये काम हुआ नहीं है, राइट? सो आपका जो भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम है उसको पहले करना शुरू करिए एंड लाइकवाइज अपनी लिस्ट में चीज़ों को करना शुरू करिए, ठीक है? रिमेंबर दैट ऑलवेज गो बैक, रिव्यू योर लिस्ट. उसमें आपने क्या क्या कर लिया है, क्या रह गया है, स्ट्राइक ऑफ करिए. सी आपने क्या छूट गया है उसको नेक्स्ट डे करिए. ऐसे करके अपने टू डू लिस्ट को लाइवली रखिए, राइट? नंबर 2 कम्स ऑन द लिस्ट इज़ टू सेट योर बाउंड्रीज. नाउ व्हेन यू नो हाउ टू प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट, यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू सेट योर बाउंड्रीज. अपनी बाउंड्रीज बनाना मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको ये टास्क करना है and there are certain tasks that you are not supposed to do. You need to have that boundary. You need to start saying no to a lot of things which act as a distraction, time wasters and doesn't add value to your day. Sometimes when you scroll on mobile phone, your half an hour goes like that and you don't know, or even 1 hour, 2 hours. You start gossiping, talking about things which are irrelevant and not adding value to your life. So keep a track of your work that you're doing, the tasks that you're involving yourself in. This will help you to set your boundaries and start saying yes to things which are adding value to your day and no to things that are
distractors, time wasting. All right. Once you have done these two things, the other thing comes on the list is you can start using a tool that will help you track your work and time. There are a lot of tools available online now because of the internet and mobile usage. There's a lot of applications that are there online. You may go explore those applications. Whichever works best for you, start using that. I personally feel Pomodoro is a very good technique which works for me, but I won't force that on you. You may go explore which time management technique works for you. Start using that. This will help you to track your time, track your work, give you reminders, alarms, and also help you to check whether you have completed a task, you have accomplished your task, you have finished your to-do list, or so on, right? So this app is a reminders. It helps you automate your work, right? So this is the third tip. The last tip on the list is to reward yourself. We humans are very much hungry of appreciation, recognition, right? And why to wait for others to recognize us? Why don't we appreciate our own efforts? So जब भी आप अपने कोई भी टास्क को कंप्लीट करते हो, even if that's a small little win, try to reward yourself. Now that reward can be anything. Treat yourself with a longer break, anything which you want to buy. Keep your shopping bag ready and say to yourself that आप ये तभी खरीदेंगे जब आपके ये टास्क कंप्लीट हो जाएंगे. So once you complete those tasks and then you shop those products, you will feel more happy. This is another way of giving yourself happiness, right? So reward yourself when you are tracking your work, when you are tracking your progress. You would know आपने क्या छोटी छोटी चीज़ों को जीता है और आप कैसे लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो. And this will give you more happiness, a sense of accomplishment, and the vibes are different. I'm sure you will feel it when you follow it, right? So start doing that. I'm sure you will feel more productive and efficient. So I'll quickly revise all the 4 tips. Do practice them and let me know how you are feeling. Number 1 is to have a to-do list, an active to-do list. Number 2 is to set your boundaries. Start saying no to things which are not important. Number 3, start using a tool or application that will help you track your time and work. And number 4 is to reward yourself. Do follow this at least for a week's time and let me know how you're feeling in the comment section, and I would love to read them. Until we meet next time, keep upskilling and keep learning. Thank you so much and bye-bye.